Order, order. Hello and welcome to Reporters Without Orders, a podcast where we talk about what made news, what didn't, and some things that absolutely shouldn't have. I'm your host, Akanksha Kumar, and joining me in the studio are my colleagues Basant and Tanishka, who were tracking the story related to allegations by some of the top-notch wrestlers against the Federation Chief, Brij Bhushan Singh. Hi Basant and Tanishka, welcome to another episode of RWO. Thank you. How hectic was it covering the biggest breaking news story last week? आप तो स्टार्ट से फॉलो कर रहे थे, आप बता दो। हाँ मतलब हैक्टिक क्या था, काम ही रिपोर्टर का खबर करना है। तो हम लोगों ने 3 दिन तक चला और 3 दिन तक लगातार हमने रिपोर्ट की और 3 ही रिपोर्ट की है, एक वीडियो स्टोरी और 2 3 ही रिपोर्ट की है। तो हाँ, डे 1 तो वही था कि क्या एलिगेशन है, जो पहले दिन प्रोटेस्टर बैठे उन्होंने क्या आरोप लगाए, और हमने ब्रिज भूषण सिंह ने उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया और उन्होंने कहा कि अगर ऐसा कुछ साबित होता है तो हम फांसी लगा लेंगे। अगले दिन हमने एक स्टोरी की कि जो सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है उसमें कितना लूप होल है और क्या उसमें कमियां हैं, और आखिरी जो मेरी स्टोरी थी कि ब्रिज भूषण सिंह कौन है। तो ये हमने 3 दिनों में 3 रिपोर्ट की। तो हैक्टिक नहीं था पर ठीक था। In what is being termed as India's Larry Nassar moment, a media interaction last week by ace wrestlers such as Vinesh Fogart, Sakshi Malik and Bajrang Punia has unleashed a volley of charges against those in charge of the Wrestling Federation of India. For those who may not know, Larry Nassar was a doctor, part of the USA gymnastics team, who was charged in multiple cases of sexual assault in 2018. This current case thus is also being seen as India's Me Too movement within the wrestling community. और बसंत, आपसे शुरुआत करेंगे। जो आपकी पहली स्टोरी थी जब जंतर मंतर पर इन सभी खिलाड़ियों के द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई है, जो वो पूरा बातचीत है उसमें कई मुद्दे उठाए गए हैं। सेक्सुअल हरासमेंट से रिलेटेड एलिगेशंस हैं और अव्यवस्था को लेकर भी बहुत ज़्यादा आक्रोश है खिलाड़ियों में। जो एक चीज़ मैं समझना चाह रही हूँ कि ये पूरा मुद्दा, हाउ मच ऑफ इट इज़ रिलेटेड टू sexual harassment allegations and how much of it has got to do with mismanagement from the top level? एक करप्शन भी बड़ा मुद्दा था इसमें। तो दरअसल जब सुबह सुबह इन लोगों ने पोस्टर डाला और ट्वीट किया कि मतलब खिलाड़ियों को रिस्पेक्ट चाहिए और फेडरेशन बाइकॉट फेडरेशन, तो हमें लगा कि चलो ट्वीट कर रहे हैं, कुछ होगा, मामला बढ़ेगा नहीं। तब तक ये लोग प्रोटेस्ट पे बैठ गए। जब तक हम पहुँचे, हमने साक्षी मलिक से और बजरंग पूनिया से बात की, तो उन्होंने बजरंग ने तो एक लाइन ये भी बोला कि मैंने पूछा कि प्रेसिडेंट से आपकी कोई बातचीत हुई, आप ओलंपिक विनर हैं, आप और साक्षी और विनस इतनी बड़ी प्लेयर हैं, आप लोग यहाँ हैं, तो कोई बातचीत तो हुई होगी। उन्होंने कहा कि हमारे प्रेसिडेंट के पास हमसे बात करने के लिए समय नहीं है। लेकिन उस वक्त तक किसी ने नहीं बताया कि इतना बड़ा एलिगेशन और इतना बड़ा कुछ होने जा रहा है। सबने कहा कि 4 बजे का इंतज़ार कीजिए। 4 बजे के बाद जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हुआ और शुरुआत में सिर्फ यही लगा कि बातचीत हुई कि हमारी बात नहीं सुनी जाती, नियम बना दिए जाते हैं और हम पे डाल दिया जाता है और आपको पालन करना पड़ता है। लेकिन जैसे बिनस बोलने आए, उन्होंने जैसे बोला कि सेक्सुअल हरासमेंट का जिक्र किया और डायरेक्ट उन्होंने कहा, आप वीडियो रिपोर्ट में भी देख सकते हैं, कि हमारे अध्यक्ष जी जो ब्रज भूषण सिंह हैं, उन्होंने कई लड़कियों का शोषण किया है। 10-20 का वो कह रही हैं कि मुझे मालूम है जब से मैंने शुरुआत करी है। और जब ये बात बोल रही थी उसी बीच साक्षी मलिक ने कहा कि ज़्यादातर जो कैंप लखनऊ में इसलिए लगते हैं कि वहाँ से शोषण करने में आसानी होगी। तो ये 2 बातें आई और ये भी उसमें कहा गया कि जो कोचेस हैं वो लड़कियों को शोषण कराने के लिए ले जाते हैं। तो ये जो 3-4 बातें आई, तो जितने रिपोर्टर थे, और मैं तो स्पोर्ट्स को बहुत करीब से नहीं जानता, लेकिन हमें भी हैरानी हुई। जो स्पोर्ट्स कवर करने वाले रिपोर्टर थे उन आपस में बात करने लगे कि ये तो होता ही है, पर पहली बार इतने बड़े प्लेयर्स आगे आके बोल रहे हैं। और अब तो ब्रिज भूषण सिंह
का मतलब एक तरीके से जो उनका बाहुबल है उन पे संकट आएगा, क्योंकि ये होता है, वो जैसे जो भी जर्नलिस्टों की भाषा, ये सब तो होता ही है, लेकिन पहली बार खुल के आया है। जैसे आपने कहा कि स्पोर्ट्स का मीटू है, तो अभी उसके बाद तो शायद किसी गेम में नहीं आया है, लेकिन वो एलिगेशन बड़ा, मतलब उसके बाद तो चीज़ें बिल्कुल ही बदल गई वहाँ पे जंतर मंतर पे, और मीडिया अटेंशन और भी ज़्यादा बढ़ गया। और ये प्रोटेस्ट लगभग 2 दिन चला है या 3 दिन? 3 दिनों तक। And Tanishka, I believe that you went to the protest site on the second day. What was your sense of the allegations being leveled by these wrestlers? And also, I think your story kind of establishes that there is no proper grievance redressal mechanism as far as the Wrestling Federation is concerned. There is something of a grievance commission headed by a man. Why is it problematic? So, like you rightly said, this is the Indian sports Me Too movement, because in 2018, when a lot of allegations came out in India, it was mostly the media fraternity, including journalists and entertainment industry, that spoke up. And it's always a sort of domino movement, right? One person starts and then everyone else starts. So in sports, that had not yet happened. When it is in at least a lot of sports, it is male dominated. Like even in wrestling, that is the case. Like even the Wrestling Federation of India, most of the top executive members are male. So and according to the Sexual Harassment Prevention Act 2013, if a company or a organization has more than 10 members, there has to be an internal complaints committee. Yeah. And there are very specific requirements to who is supposed to be in the committee. So we just had a look at the committee that they have, which is called the Sexual Harassment Committee, but it's also called the Ethics Commission. So this committee not just looks at sexual harassment allegations, but also anything like whether it's doping or fraud accusations. So that is also not technically correct, because this has to be an a separate committee to just look at sexual harassment allegations. But if it was still functioning the way an ICC should, it would be fine. But there are 3 major violations. Firstly, this is not exactly an ICC committee. And we spoke to one of the members. There are 5 people in this committee. And he said that this is all the sexual harassment allegations come to this committee. So that's how we established that this is the only current committee in the Federation looking at allegations of sexual harassment in the WFI. There is no another ICC committee as well. And he couldn't recollect when was the last time a case had come. And then we were just looking at the composition. So one of the main requirements, according to the Sexual Harassment Prevention Act, is that it has to be led by a senior woman employee, which was not the case here. It was led by a man. And the second violation was that there have to be at least half the committee needs to be women, and the committee has to be at least 4 people. So in this case, the committee was 5 people. So at least 2 to 3 people should have been women, but there was only one woman, Sakshi Malik, who was part of the committee. And thirdly, there needs to be an external member part of the committee. This is done to prevent bias, and also the person is supposed to be part of an NGO or have an expertise, in such cases, so that they can properly advise, when allegations come in, how to go about it. And because this person's from not from the organization, there is a little more trust in, that the process will be independent. The probe will be not biased. But over here, there was no external member. And I think, as one of the lawyers points out in your report, that it is kind of mandatory to ensure that it's headed by a woman, because it kind of reflects that women are equally represented within the organization, and therefore have been elevated to the level of being and ICC it has to be chief. A senior woman employee for that exact purpose, which was not the case. So there are several lapses in the committee, and a statement has been given by a WFI senior member that we will constitute a proper ICC now. But it's really a shame that it's not happened so far. Sakshi Malik, who was one of the prime wrestlers who spoke about the allegations, she's part of the committee. So, we were really keen to talk to her about her participation in the committee, whether there have been allegations that have come in, but we really couldn't speak to her. And by the time the 3rd day of the protest we went to, it was a lot of barricading. Like there was no access from the media. Like the media could not access the wrestlers. They had really,
strengthened the security by a lot. So we were screaming, we tried to chase her, but it's not the best form of journalism, but we really wanted to speak to them. But the third day it was almost impossible, except for the press conference, right? लेकिन जैसे जब हम बात कर रहे हैं संख्या की, बसंत की, कितने इस तरह के विक्टिम्स हो सकते हैं, जो एथिक्स कमीशन के मेंबर्स हैं जिनसे भी आप लोगों की बातचीत हुई है ऑन रिकॉर्ड या ऑफ रिकॉर्ड, क्या वो इस पर कुछ जानकारी दे पा रहे हैं कि इस तरह की शिकायत कभी उनके पास आई है या कभी उन्होंने इस तरह की किसी भी शिकायत पर कार्यवाही करी है, कोई प्रोब बैठी है? आप हैरान होंगी, हमने एक मेंबर से बात की, हमने उनको स्टोरी में कोट भी किया है। उनसे हमने पूछा कि आप क्या कोई और सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी है? तो उन्होंने कहा नहीं, हम ही लोग हमारे ही पास आते हैं। हमने बोला आखिरी बार कब आया? तो उनका जवाब था आए होंगे। मतलब इस तरीके से बोलना जैसे कोई सामान्य सी बात है और आप कह दें कि आए होंगे, मतलब बहुत गंभीर चीज़ होता है अगर कुछ ऐसे केसेस आते हैं। तो उनका ऐसा कहना था। हम जैसे तनिष्का जी ने बताया कि एकमात्र जिन तक हम पहुंच सकते थे वो थी साक्षी मलिक, जो कमेटी के चेयरमैन हैं। उनको कम से कम 20 बार मैंने फ़ोन किया, फिर एक बार फ़ोन किया तो कि हम 10 मिनट में आपको कॉल करते हैं। वो 10 मिनट 2 घंटे गुजर गए। फिर मैंने फ़ोन किया तो हमसे कह रहे हैं हम बैंक में बैठे हुए मैनेजर के सामने आपको 20 मिनट में फ़ोन करते हैं। उनका फ़ोन नहीं आया। तो जो चेयरमैन है वो बात ही नहीं करना चाह रहे थे, तमिलनाडु में थे आई थिंक वो। तो साक्षी मलिक इकलौती ऐसी मेंबर थी उस कमेटी की जिनसे हम बात कर सकते थे, जो बता सकती थी। तनिष्का जी ने जैसे बताया कि हमने बहुत ही कोशिश की। मैं खुद कई बार साक्षी के करीब गया और मैंने बोला कि आप बता दो कि क्या आपके सामने कोई ऐसी शिकायत आई है। उन्होंने कोई कमेंट नहीं किया। इवन प्रेस कॉन्फ्रेंस में मैंने पूछ दिया कि आप तो मेंबर हैं, आप तक कोई शिकायत आई है? लेकिन बहुत मुमकिन नहीं है कोई शिकायत आए। जो भी बातचीत में बेनस बता रही हैं कि उनको फ़ोन आए, उनके पास ऑन रिकॉर्ड है। क्योंकि इतने पावरफुल ये पूरा संघ होता है या लोग होते हैं कि जो भी शिकायत करेगा उसका करियर ख़त्म हो जाएगा। एक जर्नलिस्ट जो मुझे बता रहे थे, मैंने अपनी स्टोरी में जो प्रोफाइल है ब्रिज भूषण सिंह का, उसमें लिखा है कि 2000 रियो ओलंपिक के बाद एक कैंप लगा था आज से 5 साल पहले लखनऊ में। तो उसमें एक खबर आई कि एक जूनियर प्लेयर ने कुछ ऐसा सेक्सुअल हरासमेंट का एलिगेशन लगाया है। वहाँ के एक स्थानीय अखबार ने खबर छापी और वो जर्नलिस्ट दिल्ली में रहते हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश की यहाँ रह के, क्योंकि हम लखनऊ में नहीं थे, कि वो FIR वगैरह मिल जाए, लेकिन हमें वो कुछ नहीं मिला और आज तक हमें उस प्लेयर का नाम भी नहीं पता चला। तो स्थानीय स्तर पे अगर आप लखनऊ या जहाँ पे आप पावरफुल है वहाँ पे केस को दबाना आसान होता है, उस जर्नलिस्ट ने हमें बताया। तो इस तरीके के केसेस आने की संभावना भी नहीं है क्योंकि करियर खत्म होने का डर सबको रहता है। And there's so much like power dynamics at play, right? Which I think as a larger population, we've not fully understood that rape or sexual harassment is not just about sex. It's about power dynamics, and it matters so much because at the protest, something that really bothered me was a journalist next to me. We were just discussing what's happening, and he said that some people are saying that, how is this even possible? Because these women are wrestlers. They are so strong physically. So how can this even happen? And it was very frustrating. Disgusting. Yeah, because that's not how. I think as women journalists, we are used to such kind of mansplaining every time you cover a crime. And, that was the third day of the protest. And, in a country where sexual harassment and rape, we see every day different reports of this happening, and there has been at least some amount of awareness that we know that it's not just about sex, it's about so much more, and power dynamics is a really big factor. And there, obviously was very clear power dynamics. Of course, we don't know the details, but if we are treating this as a case where, we're at least giving a chance to people to speak about what has happened, that really can't be a thought that how could this happen? Of course, as journalists, we should question things, but this is not something to question. Whether if they are strong, how could they not? How could it happen? It was just bizarre. Right. We will continue talking to Tanishka and Basant about this controversy, and the man at the heart of this controversy, Brij Bhushan Singh, a Bahubali Neta from the Bharatiya Janata Party, who is from UP's Gonda district. Basant has done a deep dive on his profile and his sudden rise to fame. He continues to deny allegations. We will have a chat on this. The video part of this podcast ends here.
To listen to the complete podcast, log on to newslaundry.com. The subscription model is something that keeps Newslaundry afloat, but we need hundreds of thousands of people to completely transform the news ecosystem. So you pay for news, so it serves you. So click on the link with this video, subscribe to Newslaundry and pay to keep news free, और गर्व से कहो मेरे खर्च पर आज़ाद है खबरें.